था शुरुआत का, ओनली टू मेक यू फील दैट हाउ टू राइट रियल इन द लैब। अभी मैं सिर्फ फंक्शन आपको एक एल्गोरिथम समझाते जाऊंगा। सो शुरुआत करते हैं सर्चिंग से, सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, सो आई वांट टू सर्च समथिंग इन ए लिंक लिस्ट। तो एल्गोरिथम search underscore SL, that is single linked list. So what I need exactly, I need a value which need to be searched, and obviously I need the start pointer to start traversing and looking for the element in the linked list. तो ये दो पैरामीटर मुझे चाहिए प्री रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हाँ, आपके हिसाब से ये जो वैल्यू है आप प्रोग्राम के अंदर प्रिंटर स्कैन करके मांग सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अगर मांग रहे तो ऑब्वियसली पैरामीटर मुझे नहीं चाहिए, बट स्टेप पैरामीटर तो चाहिए, वो आप मैंने लिख दिया। ठीक है, देन स्टेप 1, सेट ptr is equal to start. Now because it is an algorithm or pseudocode, I can say declaration of variable is not mandatory. That part you have already understood. So ptr को declare करना as a node type, structure type, वो आप खुद करो, but my point is do not confuse कि सर का declare क्यों नहीं किया। So then I take a flag value, flag is equal to 1. So flag value is nothing but I'll check at the end what is the flag value and I'll conclude that have I got the element, have I not got the element. तो एक आरए में भी आपको एक्सप्लेन किया था like this. Step 2, repeat step 2 while ptr is not equal to null. So obviously 2 is nothing but a while loop or do while loop, जो भी है, while loop obviously. 2.1, if the value I am looking for is equal to ptr arrow role, because in our structure the data part we have named it as role. So looking at that, I am writing. Then if it is true, then I am making the or changing the flag value to 0. ठीक है, printf बाद में कर लूँगा. If it is false, that is 2.2 else, then 2.2.1 ptr is equal to ptr arrow next. ठीक है, so basically मैंने क्या किया है, ptr को start, ptr is assigned with the start value, that means ptr is pointing to the first node, I can say. If ptr is not equal to null, इसका मतलब there are some nodes are there I can traverse. पहले check करो the value I'm looking for, is it equal to the ptr arrow role? So right now ptr is the first node address, that is why here the first element will be checked. अगर ये true हो गया तो flag 0 हो गया, आप if से बाहर आ जाएंगे. If it is not true, then I have to move on to the next node. So how do I move on to the next node? Obviously this is the simple statement, ptr is equal to ptr arrow next. So now ptr is pointing to the next node. Let me explain you how it works. So I'll delete it after explaining. So if you want to write, you may write it, but not needed. Okay, so now this is start, this is pointing to this. So let's suppose it is 100, this is 200, this is 300. Suppose it is 11, 22, 33. So initially ptr is equal to start मैंने लिखा है, that means it is equal to 100. ठीक है, now this part is done, flag भी हो गया. While ptr is not equal to null, that means 100 is not equal to null, which is true.
अगर ये ट्रू हुआ तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू चेक that is the value I'm looking for. Suppose I'm looking for 55. Suppose I'm looking for 55. So if it is true, then value that is 55 is equal to 100 arrow roll number. So what is 100 arrow roll number? That is 11, because uh, this is 100 arrow this one. So 11 is not equal to 15. So obviously true. तो अभी क्या होगा, आपका else part में आ जाएगा. तो else part में मैंने क्या लिखा है, Peter is equal to Peter arrow next. That means now Peter is equal to 100 arrow next. So what is 100 arrow next? So obviously मैंने लिखा नहीं है, बट ये पता चल रहा है कि ये 200 है, ये 300 है, और ये कुछ जो भी होगा नेक्स्ट चलता रहेगा. ठीक है. सो आई एम सेइंग Peter is equal to Peter arrow next. I am repeating. Peter is equal to Peter arrow next. So obviously हमें पता है प्रोग्रामेटिकली पहले राइट पार्ट सॉल्व होता है, और जहां इक्वल साइन होता है पहले राइट पार्ट सॉल्व होता है, देन द वैल्यू इज असाइन्ड टू द लेफ्ट पार्ट. तो पहले ये पार्ट सॉल्व होगा. सो व्हाट इज पीटर वैल्यू 100. सो 100 और नेक्स्ट का वैल्यू क्या है गाइस? दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 200. सो नाउ 200 is assigned to Peter. So that means here the Peter becomes 200 in this example. So again while look, 200 is not equal to null, 22 is not equal to 55, then again Peter is equal to Peter or next. Suppose now obviously it is 33, like this it go on until some सोच लो, suppose ये null है, cross means null है, तो जब भी Peter 300 था तो now 300 arrow next is null, Peter null हो गया. So now when it is coming here, null is not equal to null, falls out of the statement. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let me remove all these things. So this is done. Then step 3, I can write end loop of step 2. Then step 4. अभी मैंने flag लिया था. I'll just use the flag value to display element found or not. If flag equal to 0, then 4.1 display element found, not found, sorry. Sorry, 0 हुआ तो found हुआ. I'm sorry. Yes, element found. Step 5, else 5.1 display element not found. Step 6, stop and exit. So am I clear? Searching path is clear or any doubt? I'm waiting, guys. If any doubt, ask. No doubt, sir. Doubt, sir. Okay. So basically मैंने सिर्फ एक लूप लगाया जो पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उसको आगे आगे बढ़ाया till it reaches the last node, and while doing that I am verifying is the element what I am looking for, it is there or not. तो अगर मिल गया तो ठीक है, otherwise okay. Another thing, okay, अगर एलिमेंट मुझे मिला तो should I continue the while loop, guys? No, 7, we can break there. Yes, we can break. Okay. So now going to the insert. And insert has many variations. At the beginning, and at the beginning we have already done it in the create function, so I will not explain that part. At the end, after a given node, that is nothing but maybe data,
before a given node, ठीक है, ये डाटा क्यों होगा, कुछ भी हो सकता है, डाटा और पोजीशन कुछ भी हो सकता है, डाटा और पोजीशन, ठीक है, ये भी डाटा और पोजीशन हो सकता है, ठीक है. देयर इज समथिंग लाइक insert after node number 2, ठीक है, that means go to the node number 2 and you insert as the new node as the third node. Similarly, insert before node number 2, so you have to insert as the node number 2 after inserting, and the node number 2 after inserting will become the third node. Am I clear? So again, another, you need to do it also in a sorted linked list. तो इसका मतलब हुआ आप कहीं भी रैंडमली आपको अलाउ नहीं है, इसको प्रॉपर्ली इंसर्ट करो सो दैट आउटपुट इज अगेन, आफ्टर इंसर्टिंग द आउटपुट इज अगेन अनदर सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है. सो लेट मी आस्क एट द बिगिनिंग, एनी डाउट है? ये तो हमने ऑलरेडी किया है क्रिएट फंक्शन में, ये सब नो? No doubt, sir. ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. लास्ट स्लाइड आ गया क्या? Insert at end. Okay, so I'll use this page. So have all of you written this in your notebook? अगर लिख रहे हो तो Sir, written. हाँ, तो I am clearing this screen so that I'll use this, because in Jamboard I guess more than 20 is not being allowed. I reached the 19th page. Okay. Insert at the end. तो अप्रोच क्या होगा? एनी आइडिया? कैन एनीवन गाइड मी और सजेस्ट मी? अप्रोच क्या होगा? सर अभी जो करंटली लास्ट नोड है उसका एंड में जो पॉइंटर रहेगा उसमें नल के बदले और एक जो हम लोग नया नोड क्रिएट करेंगे उसका एड्रेस डालेंगे, एंड जो नया लास्ट नोड होगा उसके पॉइंटर में नल इनपुट कर देंगे. ठीक है, गुड. सो जस्ट लेट मी क्रिएट अ स्मॉल डायग्राम. ना, ठीक है, ये मेरा एग्जिस्टिंग है, तो ऑब्वियसली दिस इज 100, सॉरी 100 नहीं है, ये सपोज है 100, सो ये 200, दिस इज 200, दिस इज 300, दिस इज 300, ठीक है ना. तो मुझे और एक नोड इंसर्ट करना है एट द एंड. तो एंड इन माय अप्रोच आई हैव ओनली वन पॉइंटर, दैट इज स्टार्ट पॉइंटर. आई डू नॉट हैव एनी लास्ट पॉइंटर, ठीक है. तो ये नया नोड बना. सो लेट्स सपोज दिस इज न्यू अंडरस्कोर नोड, एंड मैंने कुछ डाटा दे दिया, लेट इट बी 12, एंड ये नल होगा ही होगा. सपोज दिस एड्रेस इज 500, ठीक है. तो क्या क्या चेंजेस होगा गाइस? कैन एनीवन टेल? क्या क्या चेंजेस होगा? तो इस नल के बदले हम नल का बदले क्या करेंगे? Null will be changed from 500 500. Then it will point into this one. That's it. But as I already said that I am not maintaining any last pointer, then obviously I need to traverse the linked list to reach the end of the list. मगर ट्रावर्स अगर मैं इसी अप्रोच में करूंगा, एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? जब लास्ट नोड में पहुंच जाऊंगा और पीटर नल हो जाएगा, देन आई डू नॉट हैव द प्रीवियस नोड एड्रेस. ठीक है ना? अंडरस्टूड गाइस? तो मुझे रिपीट सर. हाँ, मैं बोल रहा था कि सपोज इफ आई डू द ट्रावर्स इन दिस वे, द प्रॉब्लम विल बी आई विल बी रीच एट द नल, बट मुझे चाहिए 300 कहीं स्टोर करने के लिए. यस और नो? देन ओनली आई कैन राइट 300 और नेक्स्ट इज इक्वल टू 500. यस और नो? यस सर. हाँ. सो इसका मतलब है द अप्रोच विल माय अप्रोच विल बी व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, I'll
try to not try. I'll take care that the previous node address is also kept somewhere. Understood? मैं आगे बढ़ूंगा एक एक करके, बट आगे जब बढ़ूंगा तो 100 कहीं स्टोर करूंगा, जब 300 जा जाएगा ये 100 के बदले 200 स्टोर हो जाएगा, जब ये नल हो जाएगा देन जो 200 और 300 स्टोर हो जाएगा, वो अप्रोच में अभी लूंगा. ठीक है. सो द algorithm insert end and obviously it is a single linked list. तो मुझे स्टार्ट ही चाहिए और एक नया डाटा चाहिए, लेट इट बी वैल्यू, दैट इज नथिंग बट टू बी इंसर्टेड. अगेन अगर वैल्यू आप प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं तो पैरामीटर में नहीं लिखने की जरूरत है. स्टेप 1. ठीक है. So I'll traverse. So obviously I'll take a backup of the start. Return is equal to start, and I need a new pointer. So let me write node new underscore node. ठीक है. Step 2. अच्छा, ये मालक स्टेटमेंट भी लिख लूँगा so that to avoid any confusion. New node is equal to node malloc size of struct node. So new node भी memory space बन गया. हाँ बोलो सर. जो स्टेटमेंट 2 है न्यू नोड इज इक्वल्स टू नोड ऑफ मैलॉक, वो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? आपका मैलक में डाउट है? हाँ सर, हम लोग का जो था सेकंड सेम में हमारे हम लोगों का था मत बताओ सर. मैंने एक कोई क्लास में मैलक एक्सप्लेन किया था, तो अब वो देखे हैं ना नहीं देखे हैं? अटेंड किया ही नहीं अटेंड? सर आई वाज इन दैट क्लास, बट मैलॉक में तो हम लोग का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ना, वो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करने में एंड मैलॉक व्हाई आर वी यूजिंग दैट? हाँ, तो मैलॉक इज डायनेमिक मेमोरी बट नॉट गिवन. सर साइज ऑफ किस साइज का मेमोरी बुक करना है वो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हाँ सर. So I am giving the size here. What is the issue? Okay sir. ठीक है. Yes. I am just trying to tell the program or the compiler book a memory for me which is equal to struct node. And आप बोले कि डायनामिक ये है, डायनामिक है, इसका क्यों यूज करते हैं? आपको क्या एक ही नोड यूज करना है या आप 10-15 नोड भी क्रिएट करेंगे? काफी सारे क्रिएट करेंगे सर. तो हाउ टू डू दैट विद इन द प्रोग्राम? ठीक है. यस सर, थैंक यू. हाँ, स्टेप 3. तो नया नोड बन गया. ठीक है. सो सिंपल न्यू अंडरस्कोर नोड इज इक्वल टू द वैल्यू आई वांट टू स्टोर. ठीक है. नया नोड बन गया, वैल्यू रख लिया. एंड कैन आई राइट डायरेक्टली विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग न्यू गलत किया मैंने. न्यू अंडरस्कोर नोड रोल इज इक्वल टू वैल्यू. And also here, if I write this also, it is correct. Yes or no? यहाँ तक समझ में आ गया? Guys? Yes sir. ठीक है. तो मेरा जो था इसमें वैल्यू मैंने रख लिया और नया नोड का पॉइंटर को नल बना दिया. सो ये स्टेप 3 स्टेप 4 में हो गया है. तो अभी मुझे ट्रैवर्स करना है. ठीक है. So let me write file ptr arrow next is not equal to null. अब ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ. मैंने यहाँ लिखा था, जानबूझ के दिखा रहा हूँ, ptr is not equal to null and I have written here ptr arrow next is not equal to null. तो obviously ये नल कहाँ कब होगा आपको पता चल रहा है? पीटर वैल्यू इस एग्जांपल में पीटर वैल्यू क्या होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा? कैन एनीवन टेल? लास्ट नोड नहीं, वैल्यू बताओ. मतलब क्लियरली लिखा हूं ना 300.
12. Yes or no? So trying to relate what I'm trying to say. ट्रावर्स होगा बट आखिर में क्या होगा, पीटीआर 300 में पहुंच जाएगा. So now when the pita is equal to 300, so what is 300 arrow next? What is the data? Null or not? 500. Yes. No, 500 बाद में होगा, पहले क्या था? Null. Null था. So null is not equal to null. False होगा कि नहीं? तो वो बाहर आ Yes. जाएगा. तो इसीलिए ये मैंने लिखा है. तो then 5.1 ptr is equal to ptr arrow next, and I guess और क्या बाकी है? ptr हो गया. और कुछ है? हो गया था, I guess. Done. Step 6 stop and exit. No. कैसे हो गया? Sorry. Step 6. एक चेंज करना है ना एड्रेस, उसको तो लिखना पड़ेगा ना. So what should I write? Tell me. यहाँ इसको 500 बनाने के लिए what should be my statement? Tell me. I repeat my question. जब ये लूप false होगा in this example, ptr जब 300 होगा ये false होगा. तो जब step 6 में आएगा ptr value is 300. Now my question is to you, what should I write to make this 500? Tell me. ptr of next is ptr next is equal to new node. Yes, ptr arrow next is equal to new underscore node. That's it. Step 7 stop and exit. Am I clear? Any doubt? नो सर. ठीक है. तो लास्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा insert after any given data, but before that, can anyone write it and show me? तो बताओ कैसे करेंगे? Anyone? Algorithm insert underscore data. So what I need? So what to insert? Then the start node as a parameter to be passed. Step 1. So I can write it this way. New underscore node is equal to node malloc size of struct node. ठीक है, तो नया नोड बन गया. Let ptr is equal to start. I do not want to do anything with the start variables. Okay. Then step 3, new underscore node arrow roll number is equal to the value. तो मैंने वैल्यू डाल दिया, एड्रेस तो अभी पता चलेगा. Now step 4. Okay. So how do I start? Can you say? तो ये आफ्टर एनी गिवन डाटा लिखा है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए? कोई बोल सकता है? Sir, we will be finding first data. देखो ये आपका स्टार्ट हुआ. Yes, obviously what you said it is correct. 11, 22, 3, 4. ठीक है. Suppose this is 100, this is 200, this is 300, this is 400. Suppose it is being asked that
insert after 22, or in other words the value is given 22. ठीक है, तो मुझे इसको कंफ्यूज क्यों हो गया, इसको 33 बना लेते हैं. ठीक है, उसको इसी इन दोनों को बीच में इंसर्ट करना है. Now, can anyone tell to insert this node in between? And obviously, मेरा नया node जो है, so this is new underscore node. तो कहाँ चेंज होगा कि बता सकता है? So 200 and 300. देखो देखो मैं क्लियरली बताता हूँ. एक चेंज तो यहाँ होना चाहिए, yes or no? Yes, sir. So that it will point to this. और एक चेंज कहाँ होगा? Sir, at New node, node. sir. यहाँ में भी होगा. So that it can point to this one. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये एड्रेस भी चाहिए और ये एड्रेस भी चाहिए. Then I can only do as per my desire, yes or no? Yes, sir. I'll write, means in practically what will happen, 200 arrow next is equal to this new address, new node arrow next is equal to 300. तो यहाँ एक चेंजेस होगा, यहाँ भी एक चेंजेस होगा. इसका मतलब है ये 200 भी मुझे चाहिए, ये 300 भी मुझे चाहिए, otherwise I cannot do it. तो there are a lot of ways to do it. One way I can do it is like मैं दो पॉइंटर को लूंगा और दो पॉइंटर पैरेलली आगे जाएंगे. इसका मतलब हुआ कि what I'm trying to say here ptr is equal to start and I'll write pre ptr is equal to start. It is one of the way. There are other ways also. जब थोड़ा एक्सपर्ट इसमें ले आएंगे तो आप शायद बिना प्री पीटीआर के भी कर सकते हैं. ठीक है, जब पीटीआर आगे बढ़ेगा प्री पीटीआर एक पीछे रहेगा. दैट इज माय ओवरऑल आइडिया. नाउ रिपीट फाइल प्री पीटीआर arrow data is not equal to. ओके, और एक चाहिए ना पैरामीटर, किसके बाद इंसर्ट करना है, तो मैंने गलत लिखा इधर. Here value is not equal to 22. Here let it be item. So that means item is equal to 22. मुझे 22 के बाद इंसर्ट करना है नया डाटा वैल्यू में है, इसलिए यहाँ मैंने यहाँ लिखा था. ठीक है, सो प्री पीटीआर arrow data is not equal to item. हमें क्लियर? जब तक ये इसके साथ मैच नहीं होगा तब तक क्या होता जाएगा, आगे बढ़ेगा. ये सब नो गाइस? Sir. Yes, sir. ठीक है. सर स्टेप 2 में पीटीआर स्टार्ट एंड प्री पीटीआर क्या क्या वो समझ नहीं आया. नो, मैंने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं. आप मुझे बताओ स्टेप 2 में क्या लिखा है मैंने. ओके सर. स्टेप 2 में क्या लिखा है बताओ. अरे मैं पूछ रहा हूँ. ओके सर, क्या आंसर माय क्वेश्चन. स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, टेल मी. सर पीटीआर को स्टार्ट से पॉइंट किया है और पीटीआर के प्रीवियस. नहीं, आई एम ओनली आस्किंग स्टेप 2. मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ. स्टेप 2 में मैंने क्या किया मैं आपसे पूछ रहा हूँ. आप मुझे सिर्फ बताओ स्टेप 2 में क्या क्या हुआ है, मुझे सिर्फ बताओ उतना. एक तो आपने बोल दिया ptr is initialized to start, और वो प्री पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट वो ही क्या है वो. दैट्स इट. अरे इसमें समझने का क्या है, इट इज सिंपली इंग्लिश. व्हाट इज प्री पीटीआर, टेल मी. इज इट अ पॉइंटर और नॉट अ पॉइंटर? यस सर, इट इज अ pointer. So now the pointer is storing what? स्टार्ट. That's it. इतना तो समझ में आया ना? यस सर. ठीक है, अभी इसका यूज क्या है यहाँ समझेंगे. तो इसीलिए आपने मुझे एक सवाल पूछा, जो इसीलिए मैंने आपको भी क्रॉस काउंटर किया कि प्री पीटीआर समझ में नहीं आया. तो आई एम राइटिंग नाउ, देन ओनली विल बी क्लियर. ठीक है, am I clear? यस सर.
ठीक है, यहाँ पीटीआर सिर्फ लिखता हूँ, फाइल ptr arrow नॉट डाटा, मैंने शायद रोल नंबर लिया था, रोल इज नॉट इक्वल टू आइटम, ठीक। Now my question to all of you guys, 22 doesn't match with 11, so what should I do? Sir, Move to the next. Move to the next. Now before moving next, if I write pre-ptr is equal to ptr, then 4.2 ptr is equal to ptr arrow next. So what exactly I have done? We have Sir, stored you- 11 into pre-PTR and PTR to like move to the next. Yes, initially ptr is pointing to this one and pre-ptr is also pointing to this one. So now आज 22 is not equal to 11, मैंने क्या किया है, ptr को यहाँ मूव कर लिया, but still the pre-ptr is here. Yes or no? Yes or no guys? Yes. जब ptr अभी इधर आ जाएगा, pre-ptr कहाँ होगा, इधर होगा. Am I clear? Yes, sir. ठीक है, so that is exactly what I have done. अच्छा, अभी जो सवाल पूछा था राजश्री, I guess you have asked ना, who? Yes, sir. हाँ, now is it clear? pre-ptr ptr दोनों कैसे काम कर रहा है? हाँ, yes, sir. ठीक है, अभी आप राजश्री मुझे बताओ, what should be my next line? मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा राजश्री, टेल मी. अनम्यूट राजश्री. Sir, second, sir. अभी क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिलेट. पीटीआर जब 300 में होगा, प्री पीटीआर 200 में होगा. तो नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट टू चेंज द एड्रेसेस, राजश्री. Sir, pre-PTR, यस, टेल मी प्री पीटीआर arrow. arrow next equals to new node. Very good, that's it. And what will be my step 6? And new node next New node. equals to PTR. Very good, that's it. Then you have clearly understood. और क्या बाकी है, ये हो गया, न्यू नोड हो गया. हाँ ठीक है, डन. Am I clear now? राजश्री, are you clear? Yes, sir. जो भी क्वेश्चन आप पूछे थे. Yes, sir. Very good. So rest. Any doubt? Insert after a given data. Now the rest things you have to carry out by yourself. That is, insert before a given data. अगर यहाँ टारगेट था 22 के बाद इंसर्ट करना है, बट अभी आप खुद लिखो 22 से पहले अगर इंसर्ट करना है तो क्या चेंजेस इसमें होगा. यू फिगर इट आउट, बिकॉज एज ए सेड अगर एल्गोरिथम में आप रटोगे तो एग्जाम में आप पक्का खराब करोगे. क्योंकि अगर मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि माय स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड रियली हाउ टू इंसर्ट a new node after any given data, so they should be able to do it insert before any data. Okay, this is all like playing with the addresses. एक आगे बढ़ाना है, एक पीछे करना है, जो भी है, you need to play with that. So anyway, I am done for today. Lab class देखते हैं. So any doubt in the theory part? No, sir. Sir, मैंने अच्छे आगे सर. ओके. सो यू आपण मैंने देखि दियंतु टिके मु टिके ब्रेक नेबी बे पूरा हाँ सर ठीक अछि. चैप्टर चलछि एंड मु क्लास टा क्लोज करूनी बा लीव कर जिबे आपण माने थिबे.
ଆଉ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଲ୍ୟାବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଖିଦେବେ। हाँ Okay. So now student just write a roll number for theory and lab. एक्सक्यूज Both. मी सर। एक second, Nikhil. Students write a roll number for both theory and lab in the chat box. Yes, Nikhil, बोलो। हाँ सर, तो मैं पूछ रहा था जैसे हम लोग का एरे में 1D एरे हो या 2D एरे हो, उसके हर एलिमेंट का एक एड्रेस स्टोर्ड रहता था हमारे पास बाय डिफॉल्ट, बट लिंक लिस्ट में जो भी एक एक नोड है उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ उसके पहले वाले नोड के पॉइंटर में स्टोर्ड है, राइट? I cannot hear you, Nikhil. नहीं देखो, आरए में आपका बेस एड्रेस इज मोर एनफ टू traverse to the whole array. Yes or no? Yes sir. So that's it. I do not have to worry about doing the third index address or last index array, because